Students, in the previous video we had discussed about the meaning of the transportation and circulation. Circulation is of three types: blood, blood vessels and heart. Now we are discussing about the blood. Blood is the liquid connective tissue. Blood is the liquid connective tissue which transport the various substances from one part of the body to the another part of the body. That means if blood is present in our body, that means we are alive. If blood is less amount, is in the less amount, that means we can't survive, we can't live. So blood is life. Because through the blood, substances are transported from one part of the body to the another part of the body. First, you should know the definition of blood and the function of blood. Blood is the liquid connective tissue. Blood is liquid connective tissue which transport the various substances. अब कौन-कौन से substances है? ऑक्सीजन है, वाटर है, मिनरल्स है, आयंस है, फूड है, हार्मोन्स है. These are carried by the blood. Waste products है. So these are transported through the liquid medium that is called blood. Now blood has four main compartments: RBC, WBC, plasma and platelets. RBC, WBC, plasma and platelets. First of all, we are talking about the plasma. Plasma is the liquid part of the blood. Plasma is the liquid part of the blood, which is what is the main constituent. That means 90 to 92% वाटर होता है. क्या होता है? वाटर. और अमाउंट में ज़्यादा अमाउंट में वाटर होता है. वाटर सबसे ज़्यादा होता है प्लाज्मा में. इसके अलावा इसमें क्या होता है? डाइजेस्टिव जितने भी फूड होता है, मिनरल्स, ऑल मिनरल्स, आयंस एंड फूड, digested food are present in the plasma. Now second is the RBCs. RBCs are the blood vessels. RBCs are the blood cells. RBCs are the blood cells in which hemoglobin is found. RBCs are also called erythrocyte. और RBCs को जो लाइफ स्पैन होती है 120 डेज होती है. अच्छा, ये मैं बता दूं, RBCs और WBC दोनों कहाँ बनती हैं? बोन मैरो में. बोन मैरो मीन्स जो हड्डी के अंदर जो खोखला होता है, जिसमें पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड बोन मैरो. In the bone marrow, RBCs and WBCs are formed. RBCs की जो लाइफ स्पैन होती है 120 डेज यानी बनती है और 120 दिन तक ही जिंदा रहता है. सो दीज आर कॉल्ड एरिथ्रोसाइट. अब RBCs की इंपॉर्टेंस क्या है? In the RBCs, hemoglobin is present. Hemoglobin is the iron containing pigment which carries the oxygen. Hemoglobin help in the transportation of oxygen in the body. But now this is sufficient in RBCs. RBCs, common name erythrocyte, formation in the bone marrow, lifespan 120 days. In the RBCs, hemoglobin is found. Hemoglobin is the iron containing red colored pigment which help in transportation of oxygen. Actually hemoglobin oxygen का साथ combine करता है and form the oxyhemoglobin, and oxygen is transported in the whole body. Next is the WBC. WBCs are called leukocyte. In the WBCs only importance help in the defense system means immunity. यानी WBC is responsible for the immunity. अब immunity है क्या? Immunity is the fighting power against the disease. यानी कि कोई भी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स आ रहा है, पैथोजन आ रहा है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती क्या? WBCs.
इसके और अदर पार्ट्स हैं ल्यूकोसाइट, मोनोलिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स. These are the parts of the WBC, but main function is WBCs provide our immunity against the disease, against pathogen. जब कोई भी डिजीज पैथोजन बॉडी में एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट WBC क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है जो हमें डिजीज से फ्री रखती है. नेक्स्ट इज द प्लेटलेट. Platelet is also important part of the blood. Platelet helps in the clotting of blood. Platelet help in the clotting of blood. Blood की clotting में help करता है. यानी कि जब कोई कट या वुंड लग जाता है तो उसमें जो है एक प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, जो ब्लड को फ्लो, ब्लड के ज़्यादा लॉस होने से रोकते हैं. मीन्स वहाँ पर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है. सो विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स आर इम्पॉर्टेंट. अगर बॉडी में प्लेटलेट कम होती है तो दैट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी. नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द second part of the circulation, that is called blood vessels, but in the next video.